Hello, my dear student. How are you all? I hope you are doing wonder. I am Rashmi, again welcoming you on my channel Math Mysteries with Rashmi. As we have started with another topic, that is how can we find out the number of zeros. So we started with the series and this is the second topic, second time we are learning, second video we can say. But yes, I hope you have practiced enough for whatever the problems, for whatever the examples we have seen in the previous session. Please practice it and put your doubts in the comment box so that I can make a video for you for all your doubts, for all your queries. But before that, you have to hit the like button. Please subscribe my channel, press the bell icon button, and yes, do not forget to share my video to your friends, family, and your relatives. They will also get the benefit of all these shortcut methods, right? So, here, what we have started, how can we find out the number of zeros? पर नंबर ऑफ जीरोस बनते किससे हैं? हम सबको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5, जब 2 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? 2 5 10, 5 1 1, राइट? सो कितने टाइम्स उस नंबर में 2 आ रहा है, मतलब उस नंबर को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसमें 2 की पावर क्या है, अकॉर्डिंगली उसमें 5 की पावर कितनी है? तो जितने भी 2 की पावर्स और 5, ऑफ कोर्स 2 की पावर ज्यादा होगी बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 5 की पावर थोड़ी कम होगी. तो हम वी हैव सीन एज हाउ कैन वी मेक 35 विद द हेल्प ऑफ 5 and 7 combination. So according to the lesser power, we will decide those many zeros will be there. क्योंकि सिर्फ इवन नंबर ही हेल्प करता है 5 को जीरो बनाने के लिए. 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं ऑड नंबर के साथ में करूंगी, 5 3s are, 5 5s are, 5 7s are, they are not going to give me zeros at the end. Only 5 2s are 10, 5 4s are 20, right? I'm getting zero there. So 4 और बाकी सारे नंबर जो है इवन नंबर, वो सब तो कॉम्पोजिट नंबर है. We have learned how can we find out the maximum power of even number. So यहाँ पर हम कोई भी नंबर गिवन हो उसकी पावर, मैक्सिमम पावर 2 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकालेंगे. And as many combinations are possible to make for 10, we will be doing it accordingly. तो जितने ज्यादा tens होंगे उतने ज्यादा zeros होंगे. That's it. So let's get started. The first step is we have to find the maximum power of 2 and of 5 in factorial 85. Right? अभी 85 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4s are 8, right? 2 2s are 4. 42 divided by 2 is going to give me 21. 21 divided by 2 is going to give me 10. 10 divided by 2 is going to give me 5. 5 divided by 2, 2 2s are 4. Again it is possible to divide, so 2 1s are 2. Whatever the quotients I got here, I will keep on adding. 42 plus 21 plus 10 plus 5 plus 2 plus 1, right? So 5 plus 2 plus 1 is 8. 8 plus 10 is 18. 18 plus 21 is 39. 39 plus 42 is going to give me 81. Let's quickly add 39, 9 to 11, carry over 1. 4 plus 3 plus 1 is 8. So 81 I got here when I added all these. That means जब मैं 85 factorial की वैल्यू लिखूंगी, so this is going to give me 2 to the power 81. तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 to the power 81 and 5 to the power what? That we will be checking. So 85 divided by 5 gives me 5 1s are 5, remainder 3, 5 7s are 35. Because 17 5s are 85. So it is completely divisible. 5 3s are 15. By 5 if I tries to divide, this will not be divisible. That is why I'll stop my division here itself. So the power for 5 I got here 17 plus 3, 20. So how many times I have 5 here with me? 5 is there 20 times, right? 5 is there only 20 times. So 2 is coming 81 times. 5 is coming 20 times. तो 5 और 2 के कितने complete set बन पा रहे हैं? Only 20. Because we do not have sufficient 2s with sufficient 5s with us. 2 तो बहुत सारे हैं, but 5 we have only 20.
So 2 to the power 81 multiplied by 5 to the power 20. So number of zeros, I will be having 2 to the power 20 multiplied by 5 to the power 20. So 10 to the power 20. That means number of zeros will be 20. लास्ट में जो भी नंबर है लास्ट में कितने जीरोस हो गए 20 zeros. 20 times 20 times zeros will be there at the end. पहले 20 zeros होंगे from the rightmost corner and then the other digits other than the zeros are going to begin. Okay, so at the end we will have 20 zeros. So number of zeros will be 20. Why? Because 5, according to 5 we are looking here. So usually कोई भी एक नंबर में अगर फाइंड करना है तो हम सिर्फ 5 का भी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे 2 का फाइंड करना इज मीनिंगलेस क्योंकि 2 तो हमको 84 में भी मिलेगा, 82 में भी मिलेगा. इसका इसका मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल 85. Factorial 85, that means 85 multiply 84 multiply 83 multiply 82 multiply 81 multiply 80 dash 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 1. सो ये यहाँ पे भी इवन नंबर्स मिलने वाले, मतलब 2 की वैल्यूज 2 की पावर्स मिलने वाली. बट 5 वी विल नॉट बी गेटिंग एवरीवेयर. 85 के बाद डायरेक्ट 5 80 में मिलेगा. बीच के किसी भी नंबर 84 83 82 81 में नहीं मिलेगा. इफ वी ट्राई टू फैक्टराइज दिस वी विल नॉट बी गेटिंग. 85 can be written as 5 multiplied by 7, right? So that is why we can directly find the value for only maximum power of 5. 2 की पावर नहीं भी निकाला तो चलेगा. बट द रीजन बिहाइंड इट, कब निकालना है कब नहीं निकालना है, द रीजन बिहाइंड इट आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू यू. क्योंकि ऑफकोर्स जितना बड़ा नंबर होगा उसकी पावर उतनी कम होगी. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 की सबसे ज्यादा पावर्स होगी. 3 की उससे कम होगी, 5 की और कम होगी, 7 की और भी कम होगी, 11 की और कम पावर्स होगी. बट yes, how many tens we have, how many zeros will be getting at the end, so that depends completely, not only 5, not only on 5, it should be the combination of 2 and 5, but the power should be the minimum. Accordingly we have to check. यहाँ पे 2 की पावर बड़ी थी, सो वी हैव टू टेक द पावर ऑफ 5 ओनली विच इज 20. क्योंकि सेट जो है वो 10 के हमको कब मिलते हैं? 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 1 0, एक और 2 लिया, एक और 5 लिया, एक और 0 मिल गया. ऐसे हमने पूरे 20 सेट्स बना लिए. अब उसके बाद में सिर्फ 2 ही 2 है, 5 है ही नहीं, तो 0 कैसे बनेगा? सो दैट इज वाई वी विल बी हैविंग 20 zeros at the end. How many zeros? 20 zeros at the end in 85 factorial. That is why the concept was how to find the number of zeros. But उसके लिए हमने पहले ये सीखा how can we find out the maximum power of prime number, not for composite, right? Let's look to the another example in which again we have to find out the number of zeros in factorial 172. अभी यहाँ पर अगर हमको शॉर्टकट, बेस्ट शॉर्टकट वे करना है अगर, सो 172 फैक्टोरियल में 2 की पावर पता ही मत करो, क्योंकि 2 की पावर तो मैक्सिमम आने ही वाली है. वी ओनली हैव टू फाइंड द पावर फॉर 5 ओनली. देख लो कि 172 में 5 की कितनी पावर्स है. 5 3s are 15, 17 minus 15 2, 5 4s are 20, again by 5, 5 6 are 30, again by 5, 5 1s are 5. So 34 plus 6 plus 1, 34 plus 6 plus 1 gives me 41. That means number of zeros in factorial 172 is 41. How many zeros will be there? 41 zeros will be there. Because 2 की पावर जो है वो 5 की पावर से तो बड़ी होगी. तो यहाँ पे 5 की पावर 41 आ रही है, 2 की पावर तो बहुत बड़ी होगी, somewhere around 200 or 300. So that is why we do not have to look for powers of 2, क्योंकि वो तो ज्यादा ही मिलेगी 3 और 5 से, अदर प्राइम नंबर्स से. 2 की मैक्सिमम पावर्स होगी. सो दैट इज वाई we will be only looking to the maximum powers of 5, which helps us to get the maximum, sorry, number of zeros. How many zeros are coming at the end? Okay, I hope this was helpful. Let's move to the next example in which we have to find the number of zeros in 927 factorial. So here also I would suggest don't go for finding the value for powers of 2.
You directly find the maximum power of 5. So 927 divided by 5. 5 ones are 5, 42, 5 eights are 40, 27, 5 fives are 25. So we'll be getting 185. Again by 5 when I divide, so 5 threes are 15, remainder is 3, 5 sevens are 35. Again by 5, 5 sevens are 35. Again by 5, 5 ones are 5. So 185, 37, 7 plus 1. So 7 plus 7, 14. 14 plus 5, 15. Sorry, 14 plus 1, 15. 15 plus 5, 20. Carry over 2. 8 plus 3 plus 2 gives me 13. Carry over 1, which is 230. So maximum, how many zeros will be there at the end in factorial 927? 230 zeros are there. So number of zeros in factorial 927 is how many zeros? 230 zeros are there. लास्ट में कितने जीरोस आएंगे? 230 zeros will be there. 2 का फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, पर कहाँ इंपॉर्टेंट है दैट ऑल्सो वी विल बी लुकिंग, कि कहाँ 2 को इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ नहीं देनी है. ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर. डायरेक्टली अगर एक ही नंबर डिसाइड करना है, सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट होता 927 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 123 समथिंग समथिंग, सो इन दैट केस हमको चेक करना पड़ता, राइट? या तो 927 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 625 और 1248 whatsoever. So अगर अलग अलग नंबर होते accordingly we have to move them. Okay, let's move to the another example in which we have to find out the number of zeros in 1 multiply 3 multiply 5 multiply 7 multiply 9 multiply 11 multiply 13 dash 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 till 99. So here we can clearly see यहाँ तो कोई even number है ही नहीं. It is the series of odd number. And just now we have seen कि 5 का even number से multiply करो तो ही हमको क्या मिलता है? Then only we get 0. 5 multiplied by 1 will be 5 only. 5 multiplied by 3 will be 15. But end में तो 5 ही आ रहा है. We will not be getting zeros. तो हमको तो zeros find करना है. So here will be 0, 0, zeros in this. इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा एंड में. एंड में 5 ही आना है, क्योंकि 7 के बाद में फिर यहाँ 9 है, देन 11. सो वी विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, बट एंड में जीरो बनेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि इवन नंबर इज मिसिंग. बिकॉज इवन नंबर इज मिसिंग. तो यहाँ पे इवन नंबर है ही नहीं. दैट इज वाई वी विल नॉट बी मल्टीप्लाइंग. वी विल नॉट बी एबल टू गेट these zeros. I hope it's easy. Let's move to the next example where we have to check how many times find the number of zeros in this number. So 1 multiply 3 multiply 5, यहाँ पे 5 है. Then next 5 we will be getting in 15. Then next 5 in 25. Then next 5 in 30. Sorry, 30 will not be there. 35. So 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Then we have 105. Then 115. ऐसे बहुत सारे 5s हैं हमारे पास में, बट 2 तो है ही नहीं. Yes, here we have 2 also, because 1024 is nothing but power of 2 only. So यहाँ से तो बहुत सारे many 5s are there. Many 5s are there, right? But 2 to the power 0, यहाँ पे 2 है ही नहीं, but 2 is missing. 2 is missing, that is why 2 to the power 0 we will be writing only in this section. Now coming to this 1024. 1024 can be written as, actually this 1024 is the square of 32. 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 होता है. 32 multiplied by 32. I know that. So 32 multiplied by 32 gives me 1024. And 32 is nothing but the 2 to the power 5. 32 को जब मैं factorize करूँगी, so this gives me 2 to the power 5. Right? So 32 can be written as 2 to the power 5. और उसकी भी power 2 है. Now we know how do we simplify this. We have the law
कि बेस में अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसकी पावर कुछ है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द पावर. सो 2 to the power 5 multiplied by 2 gives me 10. So 2 to the power 10. तो यहाँ पे 5 तो बहुत सारे हैं. More than 10 fives are there, but 2 कम है. So here we have to give the preference to 2 to the power because 5 power तो बहुत है, 10 से ज्यादा ही है, right? 5 में भी आ रहा है 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, right? Many fives are there, but 10 2 का shortage है. तो 2 हमको सिर्फ 1024 की हेल्प से मिल रहा है, which is 2 to the power 10. So 1024, if you are not understanding this, what I did below, so you simply have to factorize this 1024 because it's not factorial. फैक्टोरियल में 1024 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी, जो क्वेश्चन आएगा फिर 2 से डिवाइड करूंगी, फिर क्वेश्चन आएगा फिर 2 से डिवाइड करूंगी. देयर वी डू दैट. हियर इट इज अ नंबर, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Then again 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. Then again by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. 2 6s are 12, 2 4s are 8. By 2, 32 times. By 2, 16 times. By 2, 8 times. By 2, 4 times. By 2, 2 times. By 2, 1 time. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this can be written as 1024 can be written as 2 to the power 10. So 2 to the power 10. Here we have how many zeros will be there at the end? 10 zeros will be there at the end. So 10 zeros will be there at the end. How many zeros? At the end. 10 zeros will be there. I hope it's easy for us to understand कि कब हमको only 5 की पावर चेक करनी है और कब 2 की पावर चेक करनी है. That hint you will be getting while looking to the question only. जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि मुझे सिर्फ 2 की पावर चेक करना है या 5 की पावर चेक करना है या दोनों की चेक करना है इज मैंडेटरी. Because some cases we have to check it for both. That is why I always suggest please practice a lot. So we have seen multiple examples here. Please practice it enough so that you can ask your doubts in the comment box. And do not forget to like my video, subscribe my channel, press the bell icon button. And yes, you have to share my video to your friends, family and your relatives so that they will also get the benefit of all these shortcut methods. Please do not forget to practice it enough, put your doubts, and yes, with practice, you can definitely boost your confidence. Okay, so we'll meet in the next session. Till that, bye everyone. Take care of yourself.